Assalamu alaikum. Good morning, my YouTube family. How are y'all? I am also fine now. Last 4 days I was not well. I was having fever, cough and cold, so I was not well to do blog. But suddenly today I am a little bit feeling better. So subah I made paesh, and then breakfast we are having this sweet which I made last week, and then chana and puri. So today I got time because I don't have early morning class. I have from 10 o'clock, so that's why I made puri for after a long time, and then we are going to have our breakfast. Chalo, let's start. Here Hamad and my hubby both are having the breakfast. और उसके बाद when I'll have time, then after my class I and Usaid will have our breakfast. They liked it because the sweet which I made out of the residue of ghee, it's their favorite. And then while doing my class, I saw that sweepers from the municipal corporation have come to clear the lane of our locality. Initiative taken by them because it keeps the surrounding area clean and hygiene. So I was just having a view of that, what they are doing. बहुत अच्छा लगा था देखने में कि ultimately your locality is being kept clean. All the dry leaves they collected and they put into their cart, and my father-in-law was invigilating that. After my class I started sweeping and dusting my room. Whatever the knickknacks were there, I kept it in proper place. Because 2 days I was not well, I couldn't do anything. So anyhow today I managed to clean up little bit after my class, and then I'll start cooking also. So very fast I tried to keep all the things in the proper place, dust the cupboards and the furnitures, and then little bit sweeping and mopping I also did. This is my regular work, though the servant comes to do all these, but my room I keep it clean because early morning she doesn't enter my room. Now, after finishing my sweeping, swabbing and mopping, I went to the kitchen to do my regular cooking. Today I'm gonna make cauliflower and potato ki sabzi with peas, and I'm also making chicken aloo curry. So first I made cauliflower and potato ki sabzi, and then second I made the chicken aloo. My children love to have any non-veg, so I have to make something or the other. So today after a long time I'm making chicken, and after lunch we are going to go to a place that is my auntie's. अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम लोग मीन्स मैं और मेरा छोटा बेटा हुसैन एंड मेरी फ्रेंड शैला, हम लोग तीनों ही जा रहे हैं आज आंटी के घर, उनका किचन गार्डन और गार्डन में गोइंग टू चेक इट आउट. सो चलो लेट्स कैच अप. अब हम लोग अपना मोहल्ले से निकल गए हैं, हमारे लोकेलिटी आ गए अपना मोड़ पे, और मोड़ से हम लोग जा रहे हैं अभी हाकिम रोड. शादी भी यहाँ हम लोग का बचपन गुजरा है. आती हो तो याद आ जाता होगा. हम समझे करसे के बाद ये सीढ़ी पे चढ़ रहा है. आई थिंक सो ये चीज़ से पूरा ग्रिल बंद करवा दिया. हाँ, यहाँ पे तो अच्छा खासा पार्टी हो जाएगा. पार्टी होता है हम लोग का, है ना, हम लोग कबाब पार्टी और इसी गेट टुगेदर वाला पार्टी. आंटी का मींस पूरा फैमिली अगर इकट्ठा होगा ना, हम लोग के यहाँ कभी कभी होता है. वाह, बैठने का भी जगह है. तो आए हुए 20-25-20 साल कहीं नहीं गया था. हाँ, 20 इयर्स प्लस हो गया है इस छत पे. देखो अभी डालिया क्या बोल रही हो? सीरियसली देखो इस बार तो बहुत कम है. बहुत कम है. गेंदा ये साइज का होता था, कुछ नहीं. ये साइज का गेंदा इसे लगाए नहीं. क्या बोला, हम बैंगलोर चले गए, लेकिन एलोवेरा बहुत सारा है. एलोवेरा काट दिए सब, बहुत सारा. इसका तो वही होता है ना, एक से बहुत हो जाता है फिर. बहुत बहुत तो बहुत शौक है. अभी तो लग ही मैरीगोल्ड है लेकिन इस बार. मैरीगोल्ड बहुत छोटा, ये साइज का मेरे यहाँ होता है. अच्छा, अंकल के यहाँ बॉन्साई से लेके हर प्लांट सब हम लोग जब शायद कितने बड़े थे ना, तब से बॉन्साई देख रहे हैं यहाँ पे. ये तो गुआवा है. सर, are you enjoying? Yeah, it look like a mini park, no? You wanna sit?
हम लोग बचपन में मेरे नानी घर में था ये चाय बहुत अच्छी चीना नींबू, तो लेमन की चाय जब पियो तो हाँ बहुत टेस्टी, लेकिन है ये खट्टा नहीं होना। इसका खरा उसी है। हम लोग बचपन में मेरे नानी घर में था, बहुत खाते थे ये। ये क्या है आंटी? ओह ये अंकल सब अंकल ओह अच्छा अच्छा। पढ़ते हैं बांग्ला का किताब, हिंदी का किताब, सब किताब उन्हीं पढ़ रहे हैं। हाँ। अभी तो कितना वो मंगाए हैं, स्ट्रॉबेरी लगाया था। अच्छा अच्छा ठंडा में, हाँ हाँ बहुत हुआ था। एक साल हुआ था। हाँ देखे देखा। वहाँ पे लगाए थे अंकल। स्ट्रॉबेरी ठंडा में अच्छा से होता है। उसे बी केयरफुल बेटू, डोंट रन। स्ट्रॉबेरी हुआ था तुम्हारे, अमरूद इतना होता था, अमरूद का फेंक दिन था दरख्त, दूसरा लगा। ये भी तो बाहर अमरूद से है, मंगाए। यहाँ से नहीं। गुआवा। बाहर का है। अभी देखो ना फूल अभी हो रहा है। वहाँ देखो सेम। इसका हमको लग रहा वो पिंक वाला होगा शायद। नहीं पिंक वाला वहाँ है, वो भी लगाए हैं। वहाँ मेहंदी भी लगाए। मेहंदी भी है, मेहंदी तो बहुत हुआ है। अच्छा ये किसी दिन आंटी क्या तोड़ के लगाइए। ब्रॉड बीन्स, उससे बी केयरफुल। शायद नहीं जाओ बेटा, तुम बात सुनो। ब्रॉड बीन्स, अच्छे बच्चे हो ना। नाइस वन, क्लाइंबिंग। वही ये वाला नहीं लिए, इसको क्या बोलते हैं, बोगनवेलिया। बोगनवेलिया इतना खूबसूरत है, कलर येलो है और वाइट है। वो देखो वाइट तो है वहाँ लगा हुआ। हाँ वाइट तो देख लिए। इधर का भी ले सकते हो। ये भी अच्छा लग रहा, पिंक वाला भी। ये है अब मेरी चाची के घर में पिंक वाला। ऑर्गेनाइज कितने अच्छे से, ये पहले देख लो हर एक गमले को Beautiful white bougainvillea. I have never seen a white color bougainvillea. This is the first time I am seeing this color. Pink one I have always seen. This is quite common. In our school also we have, my uncle's place also I have this pink color. So here right now I can see many money plants. Lovely one. These are poinsettia. This is a nice dahlia. Wow, lovely color. यहाँ पे कितना सुंदर सुंदर है, छोटा छोटा। वाव। These are all hanging plants, basically money plants. कितना अच्छा लग रहा है ना यहाँ का अरेंजमेंट। देखो कितना अच्छा, different different colors of tumblers, and in that they are kept nicely. ये हैंगिंग वाला मुझे ना रैक बहुत अच्छा लगता है। Let us move. चाय बना रही है। सोफा का प्रिंट अच्छा लग रहा है ना। मामा আমিও খাবো। After coming from there, the children had little bit snacks. I bought patties from the shop and tea. So after having, they will get on to their studies, and I'll make my dinner. Today dinner also